टुडे इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टाइम हो रहा है 7:30 बज चुके हैं सुबह के एंड आई वोक अप सो यू कैन सी दिस इज़ आवर टेंट. सो अभी बाहर चलते हैं. आई विल शो यू द व्यू फ्रॉम आवर टेंट. लेट्स गो आउटसाइड. गुड मॉर्निंग एंड अभी हम जा रहे हैं वॉक पे. सो यू कैन लुक एट द व्यू. Can you look at the view? And so lovely morning it is. And at this side there is river. Wait, I will show you. Where is it? मेरी मम्मा भी आए हैं हमारे साथ ना. We are on family trip. And मम्मा सुबह उठ के खुद ही वॉक पे गई हुई है और सामने से वो आ रही है. अकेले ही चली गई है. And I will show you the river by my side. Can you see? This is the river. So beautiful. कुछ लोगों ने यहाँ पे अपना टेंट भी लगाया मुझे ऐसा लग रहा है. Good thing. वो मेरी मम्मा आ रही है पीछे. अगर आप देख सकते हो पीछे ये मेरी मम्मा आ रही है. As you can see the water here and look at the view. इतनी शांति है यहाँ पे and chirping of birds and everything. सुबह मैं birds की आवाज से उठी हूँ. Can you just imagine? We don't need alarms. Just the chirping of birds is enough to make you get up. And सूर्य देव भी आ चुके हैं. And guys आपने देखा होगा मैं शॉल में हूँ. मेरी मम्मा भी शॉल में है क्योंकि यहाँ पे ठंड है. So at night the temperature goes 13 and in the morning it goes maximum 22. तो रात को हम लोग रजाई लेके सोए हैं. This is our camp where we are staying. So this is the entrance and so this is a little bit of entrance पे आप देख सकते हो कि plants हैं and इतना beautifully यहाँ पे एक bale kind of things इसको एक entrance covering दी गई है and there is a small balcony here. छोटी सी बालकनी है. यू कैन सी इट इज़ अ लॉट ऑफ स्पेशियस कि आप लोग खड़े हो सकते हैं हम लोग यहाँ पे. एंड सो लेट्स गो इनसाइड. सो दिस इज़ द एंट्रेंस. माय टू ब्रोज आर इनसाइड एंड यू कैन सी इन्होंने हमें एक स्टैंडिंग फैन भी दिया था यहाँ पे बिकॉज ड्यूरिंग डे टाइम इट्स हॉट. सो दिस इज़ द टेंट. काफ़ी स्पेशियस है. इट हैज़ विंडोज़ ऑल्सो. ये कर्टन्स हैं आप इसको टाई कर सकते हो. दीज आर द विंडोज़ हियर. यू कैन सी आउटसाइड. वो आगे नेक्स्ट टेंट है एंड दे हैव गिवन अस अ बेड फॉर 2 people एंड देयर इज़ अनदर विंडो ऑन दिस साइड. 2 windows एंड देयर इज़ 1 more bedding. एंड यहाँ पे अंदर जाके वॉशरूम है. दे गिव यू एन अटैच्ड वॉशरूम है. And this is me. Hello. So guys, look at this lovely morning and look at the view guys. Look at the view guys. These are our camps and beautiful morning. Chirping of birds and everything and river की आवाज आ रही है साथ साथ में. So beautiful. The Gurdwara Sahib in Chail and look at the view from here.
बहुत अच्छा है यहाँ पे। आप कभी भी चैल आए तो यू शुड कम हेयर। दिस इज दी गुरुद्वारा साहिब विच इज़ हेयर ऑन इन चैल। एंड यहाँ पे एक ही पाठी जी बैठते हैं एंड ही सो नाइस। वो बहुत हम्बली आपको गुरुद्वारा दिखाते हैं। ही इज़ फॉर यू। So guys, then we got ready to go back to Chandigarh and Riva Waterfall. So हमने सोचा why not to go there and enjoy. So हमने किया यहाँ ब्रेकफास्ट एंड देन हम निकल गए रीवा वाटरफॉल के लिए। यू कैन सी बहुत ठंडा पानी था यहाँ पे वाटरफॉल का। थोड़ा सा नीचे उतर के जाना पड़ता है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना क्राउड है। गर्मियों में वैसे भी लोग बहुत ज़्यादा वाटरफॉल्स विज़िट करते हैं। सो इट वाज ऑल ओवर दी वाटर एंड फुल मस्ती और काफ़ी एंजॉय किया हमने। सो गाइज़, अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया एंड आपको वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माई चैनल। कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।